आता स्विमिंग अरे मेरी मैया! अरे 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 इस नर को एक मादा की तलाश है। जिन पंखों को ये इतना फैला रहा है वो खास तौर पर प्रजनन के लिए उगे हैं, लेकिन इस दिखावे के लिए इसे एक मंच भी चाहिए। यस, कहीं ना कहीं तेरे को मिल ही जाता है ये ड्रेस। The creator economy runs at two speeds. First, there's studio production where cost of all your equipments cost more than a car. And there's run and gun where you move fast, you improvise, you catch the moment before it's gone. But you know what the problem is? The problem is that we are told to choose. Now, every phone on earth claims to solve this shoot like a pro. I've heard that thousands of times. And sure, they actually capture decent footage. But then the real work starts. The editing needs a laptop, the grade needs desktop software. So when Oppo told me this phone shoots, edits and shares all on the device, I did what we are best at. After covering almost half of India while testing phones, we decided to fly to one of the most beautiful places on the planet, Bali. And if it worked, it would change how I travel. If it didn't, I'd come home with 5 days of nothing. Now, if you know us, we like to travel with our entire crew. But this time around, it was just me and Naren. Two completely opposite people. It's like putting Fire and Ice or Oppenheimer and Barbie, sweet and sour together. And a location as beautiful as Bali. We never thought we'll travel together. इसको Island of Gods भी कहते हैं और शायद गलत नहीं कहते. एक छोटा सा आइलैंड जहां 10,000 से ज्यादा मंदिर हैं, बीच में वोल्केनो खड़े हैं और चारों तरफ ऐसा पानी जो लगता है ऊपर वाले ने इसे बड़ी तसल्ली से पेंट किया है. मन तो ऐसा किया कि हर जगह घूमूं, लेकिन समझ नहीं आया शुरू कहां से करूं. तो मैंने सोचा जब आइलैंड पे हो तो शुरुआत वहीं से करो जहां से खुद बाली शुरू होता है, समुद्र से. वेलकम टू नूसा दुआ बीच. नूसा दुआ लुक्स लाइक किसी पेंटिंग से उठाया पिक्चर हो. सफेद सॉफ्ट सैंड जहां पैर हल्का सा धस जाता है और सामने टॉर्कोइस पानी जो हर वेव के साथ अपना रंग बदलता है. अब मजा तो बहुत आ रहा था गुरु, लेकिन हम ठहरे हम. तो Oppo Reno 16 को और टेस्ट और चैलेंज करने के लिए we decided to take it with us to the swimming pool. Now if you know me, you know that I'm not a very adventurous person and I like to play it safe. However, this guy, oof, I tell you bhai, never fails to challenge. यस, तुझे स्विमिंग आती है भाई? क्यों? अरे छोटे थे तब गांव में तैर लिया करते थे, अभी इतना कुछ खास नहीं आता. चलो अब यहाँ कराएंगे तुझे स्विमिंग. नहीं आता स्विमिंग. अबे चल ना, रण ऑफ कच्छ में भी तूने यही बोला था मुझे वो नहीं आता, मुझे ये नहीं आता. अरे 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 जहाँ ये हाल हो रहा है देख लो स्विमिंग पूल में क्या होगा. बट सीरियसली भाई, तुमने रण ऑफ कच्छ में भी मुझे पैराग्लाइडिंग करा दी, उल्टी सीधी चीजें करा दी. मुझे स्विमिंग नहीं आती है. कोई बात नहीं, आज कराएंगे. अच्छा भाई देवे, तू एक चीज बोल रहा है, वो फ्लैट मेरे नाम पे था ना वैसे? आंटी जी तो एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा फ्लैट मेरे पास ही रहेगा, कहीं भी हो, उसमें मैं चाहे फिर वापस से रिटर्न मारूं. यस, यहाँ से जाने वाला है और वहाँ निकलेगा. यस भाई पानी ठंडा है ये. फ्लैट का कागज का रखे. ओके लेट्स गो. Many minutes later. वजन के कारण ये बंदा जा नहीं पा रहा है. लेकिन भाई यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो गई. स्लाइड से नीचे आते ही स्प्लैश के साथ नरेन के हाथ से Oppo Reno 16 छूट गया और फोन सीधा पूल के अंदर. पूरे 10 मिनट तक ये फोन पूल के अंदर ही पड़ा रहा और हम दोनों इसको पागलों की तरह ढूंढ रहे थे. कुछ डाइव्स के बाद फोन मिल ही गया. 10 मिनट पानी के अंदर रहने के बाद भी Oppo Reno 16 ऐसे चल रहा था जैसे इसको कुछ नहीं हुआ. मतलब जो टेस्ट हम प्लान करके आए थे उससे बड़ा टेस्ट तो नरेन ने एक्सीडेंटली ले लिया और फोन दोनों में पास. This shows how durable the Oppo Reno 16 is. It has aerospace grade aluminum, a one-piece cold sculpted back, slim, light, comfortable for a full day in one hand. IP66, IP68, IP69 and IP69K rated. So Bali humidity, a splash, a surprise downpour, none of it was a threat.
premium but not precious. When I started using this phone, my natural instinct was to protect the design, just put on a case and start using the camera. It was after a few hours later that the light caught the back and I got that. There's a freaking 3D pop planet floating just millimeters above the surface. It's called Holoverse 3D technology. Oppo has put tens of millions of micro lenses into the back cover. So light bends and refracts and the planet genuinely appears to float. And now the most challenging part, cameras. 450 megapixel lenses, main ultra-wide 3.5x telephoto and a 100-degree ultra-wide selfie. So every angle you switch to looks like it came from the same camera. The telephoto became my favorite. At 3.5x, you get proper background compression and real portrait depth. And Bali is a place that is full of faces. In light that swings from soft gold to harsh midday within an hour, phones usually love to fix that. They bleach and over-sharpen. The Oppo Reno 16 has natural tone algorithm and for once, the marketing word matched the footage. Deeper complexion stayed deep, no over-whitening, no crunchy over-processed edge. Same story across OIS-backed main sensor, the ultra-wide and even the selfie camera. And at night, real shadow details without the grain explosion. For creators, it goes further. 4K 60 FPS HDR video across all 4 cameras. So you switch focal length without sacrificing anything. And Oppo also handed me an accessory that I didn't know my travel kit was missing. The Oppo Bubble, an ultra slim AMOLED screen that snaps onto the back and shows a live rear camera preview. So I could shoot myself on the good rear lenses, see exactly how I looked and frame the shot while the cameras did the real work. Off shutter duty, it turns the back of the phone into a tiny billboard for whatever vibe you're projecting that day. जगह अगर पंडावा बीच जैसी हो तो डुअल व्यू वीडियो 2.0 ऑन करना बनता है बॉस. Front and rear cameras record at the same time, both stabilized. So when something incredible unfolds in front of me, the same clip catches my face reacting to it. For a vlogger, that's gold. And 4K auto straighten quietly keeps the horizon level even when my hand doesn't. और एक confession, बाली इतना मैजेस्टिक है कि मेरे अंदर के कंटेंट क्रिएटर अपने आप एक्टिव हो गया. बीच, क्लिफ्स, रैंडम सनसेट्स, मैं Oppo Reno 16 पर एक के बाद एक टाइम लैप्स लेता गया भाई. एक वक्त ऐसा आ गया कि नरेन ने भी बोलना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि ये बंदा अब नहीं रुकेगा. And worth saying up front, before anyone drafts the "but which phone from the series" comment, this ultra clear camera system isn't reserved for just the phone in my hand. The Oppo Reno 16C runs the almost identical 4-lens setup but with a powerful 8 megapixel ultra-wide camera. And you're still getting the same 4K 60 FPS across all lenses. That was the first crack in my skepticism. लेकिन स्पेक शीट एक तरफ, असली टेस्ट एक तरफ. और असली टेस्ट के लिए हम बीच छोड़कर निकले जंगल की तरफ. नूसा दुआ से करीब 2 घंटे दूर बाली के अंदर छुपा हुआ एक वाटरफॉल जिसका नाम है नुंग नुंग. ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है भाई सीधे चलते चलते टार्जन मूवी के सेट पर आ गए हो. घना जंगल, आसमान छूते क्लिफ्स और उनके बीच से फटता हुआ एक वाइड पावरफुल वाटरफॉल. आप दूर खड़े रहते हो फिर भी पानी की मिस्ट आपके चेहरे तक पहुंच रही होती है और फोन तक भी. लेकिन जो फोन 10 मिनट पूल झेल गया उसके लिए मिस्ट क्या ही था. ऊपर जंगल झांक रहा था, नीचे पानी का रॉ अनफिल्टर्ड पावर और बीच में हम दो लोग बिल्कुल चुपचाप. कुछ जगह ऐसी होती है जो फोटोज में ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जगह ऐसी है जो फोटोज में तो अच्छी लगी रही है लेकिन रियल लाइफ में और भी शानदार लग रही थी. वापस आते वक्त मेरी प्रेडिक्शन वहीं सच हो गई. हाँ यश, कैसा लग रहा है बाली आके? बाली आए थे, ये तो किसी ने बताया नहीं कि वैष्णो देवी की सीढ़ियों पे चढ़नी पड़ेंगी. आ रहे हैं भाई. ओ भाई, come on, let's do it. Here's where I started to lose it. Talk about AI. These past 2 years have been all about AI. I've heard this term more than people calling out my name. While innovation isn't something bad, however, what's problematic is that these AI features on a phone are usually code name for gimmick. A toy you use for once unboxing a device and then never again. But hold on, this one might actually surprise you. You get the basics. AI Eraser cleans up a shot in one tap. Nice, but then I used PopCam.
9 curated styles, digicam, instant film, light leak, plus 5 film-inspired looks. I pointed it at a scene that was honestly a mess, flipped on light leak, and the whole frame found character instantly. Vintage and shareable as is. No 20 minutes faking a film look in a desktop editor. That's not a gimmick. That's 20 minutes I got back. And for a content creator, that's a lot. Pop-Out 2.0 makes your subject leap past the frame borders. And now it works on buildings, furnitures, even vehicles in any direction. 3 taps and a flat photo has depth it has no business having. There's a hardware AI snap key on the left too. One press saves whatever's on screen, long press records a voice note so the idea doesn't die by sunset. Double press opens mind space where everything organizes itself. Small thing, but when you're moving fast and alone, every shortcut is one less thing your brain has to carry. But nothing beats this, AI Remix Collage. One tool that I feel can single-handedly help me up my social media game. I picked up background clip, pulled moving subjects out of other shot with AI cutout, and they became stickers. Layered them over the background, out came a living mini vlog. Multiple perspectives folded into one kinetic frame, which is exactly how creators actually build a piece, shoot many angles, and then assemble a story. And before you ask me, every one of these AI tools runs identically on Oppo Reno 16C, not a trimmed down version, the entire stack. That's when the eye roll stopped. Now see, shooting for a content creator is easy. Editing is where the bit gets settled. This is the wall. Every phone that I've used in the past has hit it. You can literally capture all day, but the moment you try to actually cut a sequence, scrub a 4K 60 FPS timeline, stack layers, grade them, the phone stutters and politely asks you to go find a laptop. So I sat down and tried to break it. 45 minutes of footage, 4K 60 FPS, I started scrubbing, cutting and layering. It didn't stutter. Under the hood is a Snapdragon 7 Gen 4 with AI HyperBoost 3.0, juggling CPU, GPU, frame rates and power in real time. Scrubbing through 4K timelines, no lag. I had a shot that was slightly overexposed. AI Clarity Enhancer brought the details back. A reflection I didn't want in a window, AI Reflection Remover took it out. A slightly motion blurred photo, AI Unblur sharpened it. None of it asked me to fiddle with slider. I pointed at the problem and the phone solved it. And the thing never got hot, never throttled, never crashed. The 6.32-inch AMOLED ran at 120 Hz adaptive refresh, smooth the whole time while quietly protecting the battery. And oh, about that, you get a 6700 mAh battery inside. I shot and edited for 8 straight hours and looked down to find 40% battery left. And when I finally did need power, the 80-watt SuperVOOC charger took me back to full in under an hour. The wall that I've been waiting for actually never showed up. ट्रिप की आखिरी शाम के लिए हमने कुछ स्पेशल बचा कर रखा था। बाली के फेमस केचक डांस, सनसेट के टाइम बीच पर, बीच में आग। और जब एंड में फायरवर्क शुरू हुए, लो लाइट में वो कलर्स कैप्चर करते हुए मुझे पता था कि ये फुटेज तो एज इट इज जाएगी बिना किसी करेक्शन के। वहीं बैठे बैठे मैंने रियलाइज किया, इस ट्रिप ने हमें सिर्फ मेमोरीज नहीं दी। जो बंदा मुझे स्लाइड पर चढ़ा रहा था, जिसके हाथ से फोन छूटकर पूल में गिरा, पहले हम सिर्फ ट्रैवल पार्टनर्स थे। अब ये बॉन्ड, ये इस ट्रिप का असली सुवेनियर बन गया। और अब फ्लाइट से पहले एक आखिरी बात, एकदम ऑनेस्ट वाली। ट्रैवल इज नॉट अ स्टूडियो। There's no controlled lighting, no second takes. It's sand in your pockets, sweat on the lens, a slide you didn't plan for, and a phone spending 10 minutes at the bottom of a pool. 5 दिन में इस फोन ने वो सब झेला जो मैं किसी रिव्यू चेकलिस्ट में भी नहीं लिख सकता हूँ। Beaches, cliffs, rain, chlorine, and a rain. And every single time it came out the other side ready to shoot. Chaos हमारा प्लान नहीं था, लेकिन ये फोन उसके लिए बना हुआ निकला। See, the point is that you as a creator should be able to move fast, think creative, do things fast. And for that purpose, I think a smartphone such as the Oppo Reno 16 makes total sense.
If you like what you watch, hit that like button, smash that subscribe button for more such videos. This is me here signing out from Bali, and I'll see you in the next one.